हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स लीगल ईगल। कैसे हैं आप लोग? आज से हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे सिनॉप्सिस देख रहे होंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आई विल ट्राई टू कवर इन वन लेक्चर, बट अगर टाइम ज़्यादा होगा सो आई विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स। इस एक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि ये क्या है। इसका पूरा नाम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। ये एक्ट नंबर 9 है ऑफ 1872। इट मीन्स कि ये ईयर 1872 का 9th एक्ट है। इसी ईयर में एक और एक्ट आया था, वो आप लोग कमेंट में बताओगे कि कौन सा एक्ट है जो 1872 का है। Enactment date is 25th April 1872. Commencement date is 1st September 1872. So, what is the difference between enactment date and commencement date? Enactment date means कि उस दिन वो बन के रेडी हो गया, लेकिन लागू कब से हुआ? 1st September 1872 से। So, commencement date means कि उस दिन से वो enforce में आया। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इज़ 11 एंड चैप्टर 7 जो कि डील करता था सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस थे उसमें, वो रिपील्ड हो चुका और वो रिपील्ड होके न्यू एक्ट बना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सिमिलरली चैप्टर 11 डील करता था पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस थे उसमें, तो वो भी रिपील्ड होकर पार्टनरशिप एक्ट बना। नाउ हम जब देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो वो डिवाइडेड 2 पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट है वो सेक्शन 1 to 75 है, जिसमें हम पढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पार्ट इज़ सेक्शन 124 से लेके 238 तक, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे वी विल डीलिंग विद इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। इंट्रोडक्टरी पार्ट इज़ ओवर, नाउ वी विल रीड द बेयर एक्ट। सो सेक्शन 1 जो कि हर मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में और हर एक्ट में शॉर्ट टाइटल ही होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. It extends to the whole of India and it came into force on 1st day of September 1872. I have already told you कि commencement date इसका 1st September 1872 है and it is important, प्रीलिम्स में मोस्टली पूछा जाता है। इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मीन्स definition. It is also known as definition clause. So section 2A deals with the definition of proposal, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent that other to such act or abstinent, he is said to make a proposal. So day-to-day life में we do an offer, like A want to sell his radio set to B, so it is a proposal. and अगर B अपना assent दे देता है कि okay I will buy, so that proposal is said to be accepted, and when that proposal is accepted it becomes a promise. तो इसी के साथ हम लोग section 2 clause B भी पढ़ते हैं। So when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. Clause C defines about the promisor and promisee. ये बताता है कि promisor कौन है, promisee कौन है। So the person making the proposal is called the promisor and the person accepting the proposal is called the promisee. जो proposal दे रहा है, कर रहा है, ऑफर दे रहा है, दैट इज प्रोमिसर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रोमिसी है। सेक्शन 2 क्लॉज डी डील्स विद कंसिडरेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और promises to do or abstains from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise.
It means when at the desire of the promisor, the promisee of any other person has done or abstained from doing anything, or does or abstain from doing anything, or promises to do or abstain from doing something. Such act or abstinence or promise is called consideration. Like when I have given you example, when A wants to sell his radio for 500 rupees to B, so when B will give the amount in return of that, so that amount will be termed as consideration. In short, what the promisee gives in return of that particular thing will be considered as consideration. Section 2E defines agreement. What is agreement? Every promise and every set of promise forming the considerations for each other is an agreement. हर promise या set of promises जब वो consideration उसमें include हो जाता है तो वो agreement बन जाता है. Section 2 clause F defines reciprocal promise. 2G defines that agreement not enforceable by law is said to be void. जो agreement enforceable नहीं है law के द्वारा वो void होगा. जो agreement enforceable है law के द्वारा वो contract कहलाएगा. Section 2I the voidable contract, and 2J is a contract ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. So guys, I will continue the rest of the part in next lecture. If you like my video, do like, share and subscribe my channel. Thank you.